मैंने मतलब अक्सर देखा है जब भी कोई बोरिंग का काम होता है, जब भी कोई पानी निकालने का काम होता है, जब भी सड़कें खुदती हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें से रॉक ही निकले, नीचे मट्टी भी होती है, फिर नीचे पानी निकल आता है। लेकिन किस तरीके से ये डिफ़ाइन करते थे, किस तरीके से ये डिसाइड करते थे इस रॉक को काटेंगे तो नीचे रॉक ही रॉक है, और उसके नीचे मतलब है कि वाकई वो सख्त पत्थर है, नीचे गहराई तक पत्थर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। आज मैं घड़ी लगाना भूल गई। आप लोग वीडियो पूरी क्यों नहीं देख रहे हैं? आप लोग वीडियो पे वॉच टाइम पूरा क्यों नहीं दे रहे? क्यों आप लोग हमारी वीडियो को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों? तो आज की हमारी वीडियो है क्यों? पहले तो मुझे ये बताया, अब तो मैं यही अटक गई। गलत तो कर दिया आप सामने बोलकर। अब मैं पूरी रात जागती रहूंगी कि क्यों, ये क्यों। संदीप माहेश्वरी ने कहा था क्यों पता चल जाएगा तो फिर आप काम करोगे। वो कह रहे हैं क्यों, आप खुद ढूंढो। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बहुत ही उम्दा, लेकिन मैं भी पढ़कर इस क्लाइमेक्स को डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। चलो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोस्ट डेंजरस टेंपल इन द वर्ल्ड, रानी का वाव। तो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, there is a mysterious ancient structure in Gujarat. What is it? Archaeologists and historians tell us a standard story. This is called Rani Ki Vav. It is a step well built for the locals so the locals can get down these steps and draw water from this well. But you are about to learn that this is not a step well, but it was built for a completely different reason. What you're looking at is one of its kind. It's an inverted negative temple. Some fancy words, you may think. A typical Hindu temple starts with the ground level, has some steps going up to increase its height or altitude gradually. Finally, at the tower area, starts with a large base and then ends up having a pointy end at the top, right? Now, Rani Ki Vav is designed exactly the opposite way. It starts with the ground level, slowly starts to decrease its altitude. You gradually go down, and at this area, it starts with a larger top but ends up having a pointy end at the very bottom. Maybe I can do better. So here, we're making a model of Rani Ki Vav. Imagine this foam is the piece of land, and I'm starting to carve the steps here, and then there is a flat area here, and then I carve more steps, then a flat area, and so on. And at the far end, I've started to make a deep, so-called quote-unquote well, which gradually reduces in its radius towards the bottom. If you look at this model now, it looks very much like Rani Ki Vav, right? But in order to see the negative temple, we have to fill up the empty space and see what happens. So I've taken some plaster of Paris and I'm going to fill up the empty space. I'm filling up everything and kind of leveling up the ground level. The plaster of Paris is now slowly solidifying inside the empty space. In a few minutes, it completely solidifies. Now remember, I told you it's an inverted negative temple, so I have to invert this model. Now, let me cut off the foam and see how the solidified empty space looks. The foam represents the positive material, and I'm slowly removing the positive material. As I'm doing it, you can start to understand that it looks very much like a Hindu temple. Let me clean up the foam sticking on it, and you can see for yourself.
This is not just looking similar to an ancient temple, it's looking identical to a typical ancient temple. I have just proved my theory that Rani Ki Vav is not a step wall, but an inverted negative temple. If you go to most ancient temples, you will see steps rising in altitude. Then there will be a small shrine called mandapa, and then there will be more steps leading to more mandapas. And at the far end, you will see a giant tower with a pointy top. And this is exactly what we see here. If we exclude the minor details and look at the macro model, there is no doubt that it was built as a negative inverted temple, and no other temple has ever been built like this, not only in India, but in the whole world. So what we are looking at is actually a wonder of the world. No one has understood that this is such a temple in the last few centuries. I think I am the first one to fully understand this. Now, how did I realize that it was a negative temple? I visit hundreds of ancient sites, and the energy and vibration in every place is usually very positive and peaceful. However, our entire team became very negative as we entered the site. They felt anger and sorrow. They blamed it on the weather and other things, but I could feel the negativity get more and more intense as I went deeper and deeper into the structure. This is exactly the opposite of what happens when you visit a positive temple. Typically, in a Hindu temple, as you walk towards the main chamber, your positivity increases and you reach a calm, joyful state when you're in the main chamber. Of course, you can easily dismiss this as pseudoscience, but we have all had at least one instance where we met a negative person, but we did not trust our instinct and paid for it. But if it has such a negative vibe, what happened to the builders who built it? This is the crazy part. After creating such a negative structure, the builders seem to have understood its energy. They completely abandoned this place and moved out of this area. All the locals were also forbidden from visiting this place. Nobody entered this location for many centuries until 1890, when two British archaeologists accidentally, quote-unquote, discovered this structure. They have recorded that initially nothing was visible except a small pit and a few pillars. The whole place was completely covered with dirt. In fact, the two archaeologists expected to find a very small structure when they started excavating it. But when they started to understand about the actual size of this place, they gave up the excavation project. There have been at least 5 different attempts to excavate and restore this structure since then, and every attempt has been stopped halfway because they keep finding more and more elaborate structures. The last excavation and restoration attempt was done between 1981 and 1987. Did they succeed in finishing the job? No. They could only finish the job up to this part, and beyond this line, no one is permitted because the excavation and renovation is not complete. And experts are embarrassed to admit that it may never be completed. Why? Because as they excavate more and more, they keep finding more and more stuff. Some say this structure actually stretches underground for acres. Some say the so-called well, it keeps on getting deeper and deeper, just like the mystery of the structure. This place is so mysterious that archaeologists sheepishly admit
that no one actually knows the original name of the structure. Today, it's simply called Rani ki Vav, meaning the queen's stepwell. Did a queen actually build such a structure? And did she just name it simply as a queen's stepwell? After quote-unquote discovering this structure, archaeologists and historians searched for some evidence about the builder, as they could not find anything on the site. And they found an obscure 14th century text that talks about a stepwell built by a queen. So they've conveniently pinned it on her. Experts admit that this is only a guess, as they have not found one single inscription about this queen in all of this giant structure. Think about the human mind for a second. When people donate a single stone block to a temple, they write their names all over it. When some generous influencer buys food to the homeless, they take a picture of that and post it everywhere. Who built the world's only inverted negative temple? And why did they not write their name on the walls even once? However, experts have tried their best to keep this place mystery-free, and they've even claimed that a statue found here shows the queen who built it, and she built it in memory of her husband. However, the statue looks like any other female statue in the temple. And why didn't the royal courtiers write anything about such a wonderful structure? If she did construct it in memory of her husband, why isn't the husband carved all over the structure? In fact, he's not even carved once, because we can identify all the statues here. Nearly all of them are Hindu gods. But whoever built it was very special. It needs a superhuman thinking to merge both positive and negative construction techniques. Wait, positive and negative construction techniques? What is that, right? You see, ancient Indians used two major types of construction techniques. The first construction technique follows addition of materials. This is how we build everything today. We start from the ground and start adding blocks from the bottom to the top. This is the positive construction technique. But ancient builders of India also used a negative construction technique. They created structures by removing materials. They did not add a single piece of stone, wood, or metal to these temples. These temples were created by scooping out tons and tons of rocks from hills. The builders started from the top of the hill and removed the material from top to bottom. This is the negative construction technique. But the unique aspect of this structure is that it has employed both positive and negative construction techniques. First, the ancient builders had to remove everything. They had to clear the trees and then had to dig a giant crater into the ground, removing tons and tons of dirt. How much dirt are we talking about? This structure is approximately 200 feet long, 65 feet wide, and 100 feet deep. I calculated the approximate volume of this. So first, they had to remove 65,000 tons. Yes, 65,000 tons of dirt from top to bottom. This was the negative part of the construction. This is by no means an easy job even today. Even if you use modern earth-moving machines, it can still take a very long time. But this is actually the easy part of the construction. After this, they had to start from the bottommost level and start adding stone blocks. This is the positive construction technique. But at this depth of 100 feet,
water seeps into the soil and makes the soil wet. So they had to put in a very strong foundation. How many stone blocks were used for this construction? Too many to count. How many floors do you think this structure has? 7 floors. Yes, it has a total of 7 levels, just like most Hindu temples. Every level is filled with pillars, beams, not to mention beautiful statues. So imagine the amount of time and effort needed to create such a brilliant structure. What is Rani Ki Vav's real name? Why was such a structure built? Why did the builders want to create a negative structure? Did something happen to the builders while constructing a massive negative structure? Is this why they abandoned the site? Please let me know your thoughts in the comment section. I am Praveen Mohan. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe, and I'll talk to you soon. Bye. जी जनाब, बहुत 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 ही ज़्यादा मिस्टीरियस। और फिर वही सवाल ज़हन में, किस तरह ये काम करते थे, किस तरह किस मशीनरी से ये काम करते थे, क्या लॉजिक होती थी, क्या वजह होती थी, क्या उनके माइंड में होता था। एक चीज़ होती है कि इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर लगा लगा के उसके अंदर नक्शो निगारी करके एक चीज़ बिल्ड करता है, लेकिन ऐसी क्या वजह आ पड़ती है, या ऐसी क्या मतलब है कि एक कारीगरी दिखानी होती है दुनिया को, आने वाली पूरी दुनिया को। मैं कहता हूँ ये रहती दुनिया तक रहने वाली चीज़ें हैं। जब तक ये दुनिया है ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो शायद ये अपना एक हुनर दिखाते थे, शायद ये अपना कोई मकसद बताते थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते थे, क्या कुछ कर सकते हैं। और इतने हज़ारों टन मटेरियल निकला वहाँ से, एक रॉक को काटा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मतलब अक्सर देखा है, जब भी कोई बोरिंग का काम होता है, जब भी कोई पानी निकालने का काम होता है, जब भी सड़कें खुदती हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसमें से रॉक ही निकले, नीचे मट्टी भी होती है, फिर नीचे पानी निकल आता है। लेकिन किस तरीके से ये डिफ़ाइन करते थे, किस तरीके से ये डिसाइड करते थे, इस रॉक को काटेंगे तो नीचे रॉक ही रॉक है, और उसके नीचे मतलब है कि वाकई वो सख्त पत्थर है, नीचे गहराई तक पत्थर ही होगा, और उसमें हम डिज़ाइन बना सकते हैं। वाकई बहुत हैरानकुन बात अपने आप में। मैं ये कह रही थी, मुझे जहाँ तक समझ में आया, नेगेटिव टेक्नोलॉजी की जो उन्होंने बात कही, पहली बात तो मैं प्रवीण मोहन जी को बहुत सराहूँगी। बहुत अच्छी वीडियो बनाई उन्होंने, और इसके अंदर तो टोटल इन्फॉर्मेशन थी, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेम्पल्स, दूसरे टेम्पल्स के भी उन्होंने हवाले दिए इसके अंदर। तो इन्होंने जो बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया कि नेगेटिव कारीगरी क्या और पॉजिटिव कारीगरी क्या। तो इन्होंने बताया नेगेटिव कारीगरी वो जो ईंटों के थ्रू जो आज भी हम मकानात बनाते हैं, तो इस तरीके से जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो भी मकानात बनते हैं, जो भी टेम्पल्स बनते हैं, ये होता है पॉजिटिव। और नेगेटिव ये कि आप खुदाई कर यानी कि उसके इर्द गिर्द की हिस्से को तराशो खराशो और एक शेप दे दो। अच्छा, इसके ऊपर जो स्क्रिप्चर्स बने हुए थे, जो बहुत सारी मतलब चित्रकारी की गई है, तो बताया गया है कि रानी का वाव यानी कि जो रानी थी यहाँ पे, उन्होंने अपनी लाइफ के हवाले से वो चित्रकारी करवाई है, अपने हस्बैंड के हवाले से, और क्या रिलेशन थे, कैसे ताल्लुकात थे, क्या क्या था उस दौर में, वो सब उन्होंने बनवा डाला है। अच्छा, उस वक्त के मैं बोलूँगी बिल्डर्स भी इतने कमाल के थे, इतनी महारत के साथ ऐसी चित्रकारी, ऐसी तराश खराश कर पाए वो, कि शायद ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज के दौर में मुयस्सर नहीं है। कि बाकायदा बार बार हम जिक्र कर रहे थे वीडियो में कि कोई पीस ऑफ केक तो नहीं है, ये कोई ऐसा फॉर्म की कोई चीज़ तो नहीं है कि जिसको हम तराश दें और अपनी मर्ज़ी से हम जहाँ से लाइन मारनी मार दें, जहाँ से कुछ थोड़ा हिस्सा दबाना है दबा दें, जहाँ से थोड़ा सा पीस निकालना है निकाल दें। ये तो एक चट्टान जैसी ज़मीन है, एक पुख्ता ज़मीन है, और उसके अंदर किस तरीके से इसको शेप देना, और शेप भी ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड कि अंदर आपने देखा बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर रास्ते अंदर से अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर एक कुएं टाइप का जो शेप बना हुआ है वो भी बिल्कुल अंदर बहुत ही डीपर है। ग्रेजुअली आप नीचे जाते जाओगे और वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये आसान बात नहीं है इसको बनवाना या बनाना। तो मैं हैरान हूँ कि उस दौर में ऐसी चीज़ें कैसे हुआ करती थी। अच्छा, आखिर में उन्होंने भी सवाल छोड़ा कि इसका रियल मीन क्या है, ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, इस राज को कोई फाश नहीं कर पाया, सबने अपने अपने अनुमान जताए।
सबने अपने अपने मफरूज़े ज़ाहिर करें, सबने अपने अपने थिंकिंग बताइए कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन एक ठोस सबूत नहीं मिले जिससे पता चले कि क्यों बनवाया गया था, किसने बनवाया था और किस एवज़ या किस वजह के या किस कारण बनवाया था। मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस देखने के बाद ये मेरे ख्याल आता है जहन में कि कोई ना कोई तो औज़ार होंगे, कोई ना कोई तो मशीनरी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या औज़ार नहीं मिले कभी ज़िंदगी में, कभी उस तरह की मशीनरी नहीं मिली। कोई भी लोहे के बने हुए होंगे, कोई हथौड़ी टाइप होंगे, कोई छीनी होगी, कुछ ना कुछ तो पेचकस टाइप होगा, कोई ना कोई ऐसे औज़ार जिससे वो मतलब है कि एक डिटेल देते थे, आँख तक बनाते थे, हाथ तक बनाते थे, उंगलियां तक बनाते थे, बाल तक बनाते थे। प्रॉपर कपड़े के ऊपर डिज़ाइन होता था तो उस डिज़ाइन तक को भी किसी तरीके से ये डिज़ाइन बना लेते थे। तो क्या इस तरह से छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट, क्या इस तरह से छोटे छोटे तो वो क्यों नहीं मिले जब एक पूरे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं? तो इस तरह की कोई चीज़ें कभी सामने नहीं है। मेमोरी के तौर पे उन्होंने ये सब बनवाया। मैं भी ये सोच रही थी कि इतनी कमाल की चित्रकारी की गई है, इतनी कमाल की नक्शेनगारी की गई है, तो क्या जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कहीं मिस हो गए, कहीं गुम हो गए? ये तो ऐसी चीज़ें जो रहती दुनिया तक मुझे लगता है रहने वाला है। ये कभी भी अच्छा देखिए डिस्कवर भी 80s में हुआ, 1980s में हुआ। उसके बाद इसको इसके थोड़ा सा हिस्सा मिला, फिर थोड़ा और इसको खुदा गया और फिर ये पूरा का पूरा निकल कर बाहर आया। तो क्या औज़ार उस वक्त के जो औज़ार थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे जिनके थ्रू ये काम करा करते थे, क्या वो बिल्कुल गायब हो गए, गुम हो गए, या इसके पीछे भी कोई राज है, कोई इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, या इसके पीछे भी कोई कारण या रीज़न है कि उनको घुमा दिया गया, उनको बिल्कुल एक तरीके से गायब कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के हाथों ना लग जाएँ या आने वाली नस्लों को ना पता चल जाए कि हम किस तरीके से यूज़ किया करते थे। मुझे शायद ऐसा भी लगता है कि वो औज़ार बिल्कुल ही रुपोश कर दिए गए। अब इसमें बाकी एक मिस्ट्री की बात है और इसके अलावा भी ऐसे कहीं टेंपल बनाए गए हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव तरीके से बनाए जाते थे। इसके अलावा भी हमने एक दो और भी टेंपल देखे। इसके अलावा तस्वीर में भी एक पूरी चट्टान को काट के एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का टेंपल था, लेकिन वाकई थोड़ी देर के लिए इंसान दंग रह जाता है कि बनाने वाले ने किस तरह बनाया। हम दीवार पे या हम हाथ से कलर से पेंटिंग की हुई किसी की देखते हैं तो हम उसको दाद देते हैं कि वाह यार तुमने क्या पेंटिंग बनाई, जबकि वो बुरश होता है, कलर होते हैं और उसको हमने अपने हिसाब से जोड़ना होता है। अच्छा, प्रवीण मोहन जी भी मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि इतना कमाल का मॉड्यूल उन्होंने भी बना दिया और मुझे ऐसा लगता है वो ये कह रहे थे कि मैं शायद पहला इंसान हूँ जिसने इतना गौर किया है या जिसने इसको जानने की कोशिश की है और किसी और की तवज्जो इस तरफ नहीं गई है। सदियों लोग यहाँ नहीं आते, तो मैं हैरान हो गई हूँ सुनकर तो अपने आप में कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे लोग नहीं आते, या शायद यहाँ पे मतलब दूसरे टेम्पल्स की तरह लोग नहीं आते होंगे। और उन्होंने मॉड्यूल पूरा बनाकर और उसको तराश खराश कर फॉर्म बनाकर फिर प्लास्टर ऑफ पैरिस डालकर बताने की कोशिश की कि कैसे बनाया गया होगा और ये किस तरीके से दिखता होगा और किस तरीके से पीछे इसको बनाने में क्या क्या कारीगरी हुई थी, क्योंकि वो बाकायदा उन्होंने बॉक्सेस बनाए फिर उसको कट किया। तो मैं कहूँगी वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में जाकर बहुत ज़्यादा डीपेस्ट जाकर समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्लियर हो जाए उन्हें। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।